and move directly back into the presentation. Okay, so the important takeaway from last lecture was that um, calculus of variation leads to the Euler Lagrange equation, जो कि if we are using some functional f, which is a function of some independent variable x, a displacement function or something similar. This could be like temperature in case of heat transfer key analysis. It could be velocities in the case of computational fluid dynamics, also called CFD, right? Or it could be anything else इसके ऊपर जो है ना आप काम कर रहे हो. That is your phi and its first and second derivative. For example, if this is with respect to x, then the Euler Lagrange equation takes this form. But this is not the only form that the Euler Lagrange equation could take. Okay? This is, I believe, chapter 5 from the FEM textbook. वहीं पे इसकी lots of detailed information and explanations are available. ये करने से पहले हमने यही Euler Lagrange equation for some functional L, which is a function of the independent variable time, some uh, x which is a function of time, and x dot के point of view से अगर हम इस L को लेना, then the Euler Lagrange equation takes this form, which was the Lagrange equation जो कि vibrations में भी हमने इस्तेमाल की थी. ठीक है, जिसके बारे में the reminder was कि इसमें what we used to do was L, the Lagrangian L had two components. It was the kinetic energy minus the potential energy. The kinetic energy was half mx dot square. Potential energy was half kx square. So hence you can see that yes, indeed, this Lagrangian is a function of time because x is a function of time, and x dot. ठीक है, Lagrangian के अंदर कोई x double dot नहीं है. So since x double dot नहीं है, इस वजह से इसकी डेरिवेशन ऑफ द लैग्रांज इक्वेशन इज इजियर. अगर कोई x डबल डॉट भी हम अज्यूम करते कि क्या पता कोई x डबल डॉट भी हो लैग्रांजियन में, देन एक थर्ड टर्म भी आ जाती जो कि ये वाली इस तरह की टर्म होती, राइट, जिसमें ये डबल डेरिवेटिव होता, बट इस केस में नहीं था, राइट. सो कहने का मकसद ये था कि इस लैग्रांजियन का इंटेग्रल को मिनिमाइज करने से जो सोल्यूशन मिलती है, दैट इज द सोल्यूशन टू आवर actual differential equation, which is mx double dot plus kx is equal to 0, because if you take this definition of my Lagrangian and plug it into the Lagrange equation, I get mx double dot plus kx is equal to 0. Okay? Because the partial derivative of L with respect to x dot is just mx dot, and if I take d by dt of mx dot, I get mx double dot minus the partial derivative of the Lagrangian with respect to x is minus kx. So minus of minus kx is plus kx. So if I plug in this definition of L in the Euler Lagrange equation, I get the differential equation corresponding to my vibration का 1D vibration का problem. ठीक है? So something similar happens with all sorts of other, physical differential equations के problems. This could just be used generally to solve differential equations. जिसकी एक example है, for example, ये extension in a bar. ठीक है? So अभी तक extension in a bar को हम लोग discretize करके, एक डिस्क्रीट मासेस में कन्वर्ट कर रहे थे. अगर हम इसकी कंटिन्यूअस फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में इसको देखना चाहें ना, तो this is just an example, not really part of the course essentially, but still, let's say you've got this bar जिसके ऊपर एक force per unit area, this f of x is force per unit area apply हो रहा है. ठीक है? So looking at one small element of this bar, ठीक है, one small cross sectional area इसका ax है. So ax cross sectional के area के अंदर, of course this is also a function of x because this could be have some arbitrary profile. उसके अंदर looking at this small segment, dx is thin slice of this bar, and doing a force analysis, equilibrium analysis on it leads us to say कि अच्छा इसके एक साइड पे stress into area है, दूसरी साइड पे stress, ये जिस तरह x की डायमेंशन के साथ बढ़ रहा है, वो वाला एलिमेंट ऐड हो रहा है. ठीक है? और एरिया भी x डायमेंशन के साथ जिस तरह बढ़ रहा है वो ऐड हो रहा है, राइट. सो दिस इज वंस अगेन स्ट्रेस इनटू एरिया, बट नाउ द स्ट्रेस इज स्लाइटली डिफरेंट एट द right side of my small thin slice. ठीक है?
or there is an applied force which is f of x, which is force per unit area multiplied by the area. ठीक है? So an equilibrium analysis would mean that this plus all of this is equal to this. ठीक है? So अगर हम ये करें, stress into area on the left side and the right side, और उस पे फिर एक force वाला element है, इसका एक balance बनाएं और थोड़ी सी simplification करें, तो you don't have to totally follow this, but you're going to end up with this differential equation at the bottom. So this is a continuous उसमें realm में not discrete करके, discretize करके नहीं, continuously अगर इसे देखा जाए तो the differential equation for a bar. ठीक है? So इसमें if E and A do not depend on X, which means कि you've got a prismatic bar, then this just becomes EA बाहर आ जाएगा, and this just going to become the double derivative of U with respect to X. And अगर force external force now, so that means कि all you're going to be left with is EA d square U by dx square. ठीक है? So which is the governing differential equation for a prismatic bar with no applied force. ठीक है? So हमने कुछ टाइम पहले जब बार्स के बारे में वैसे ये उसकी बात की थी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड की, तो हमने स्ट्रेन एनर्जी को मिनिमाइज करने की बात की थी. स्ट्रेन एनर्जी वाज अ फंक्शनल, सो इसको आप इस तरह देखें ना कि दिस इज आई, जो हमने जेनेरिक फॉर्म में देखा था ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज pretty much I, and this whole thing is F, sort of, right? So this I is some integral of F. ठीक है? और इसको minimize करना is equivalent to solving the governing differential equation. If I plug this F into the Euler Lagrange equation, I get this differential equation. ठीक है? So इसमें if I plug in stress और strain की जो values हमने पहले देखी थी, और dv को मैं instead लिख दूं a into dx. ठीक है? So this now becomes my f, right? So this is f dx, integral of f dx. ठीक है? So I want to plug this f into the Euler Lagrange equation. ठीक है? So ये f क्या था, एक दफा दोबारा से देख लेते हैं. Half ae du by dx का square. ठीक है? So what we want to do is कि if f is equal to half ae times the square of du by dx. ठीक है? So यहाँ पे phi की बजाय हमारे पास the thing that we are using is called u. X is still called x, right? So what is going to be this first time? Partial f by partial u. यहाँ पे एक स्क्वायर था by the way. हमने ये सारी की सारी टर्म्स कैलकुलेट करनी है, राइट? सो partial f by partial u is actually just going to be equal to 0, because इसके अंदर u नहीं है, इसके अंदर सिर्फ ये वाली टर्म एग्जिस्ट करती है. दिस टर्म is du by dx, right? Also could be called ux, and this term is uxx, यानी के डबल डेरिवेटिव. ठीक है? अच्छा, I'm going to switch to this my webcam, sort of. I hope this works. ये थोड़ा सा लैग पे चल रहा होता है, तो इस वजह से मैं इसे इस्तेमाल करना नहीं चाहता. कुछ ज्यादा ही लैग पे चल रहा है, या शायद बंद हो गया. Okay. So what we're doing is कि f is ae, half of ae times. Okay, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा. इसे नीचे होना चाहिए था, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं. हाँ. f is half of ae du by dx square, यानी कि half of ae ux square. ठीक है? This makes sense.
अगर मैं partial f by partial u करना चाहूँ तो that is equal to 0 because there is no u in it. ठीक है. If I take partial f by partial ux, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? इसमें फिर ux exist करता है. So this is going to become ae times ux, right? Because just the partial derivative of f with respect to ux में ये ux square है यहाँ पे, so 2 बाहर आ जाएगा, and this is what we are going to be left with. And partial f by partial uxx is also equal to 0 because इसके अंदर double derivative भी नहीं है. ठीक है? And the Euler Lagrange equation read, if you go back to the Euler Lagrange equation, it read partial f by partial, in this case, it's going to become partial x by partial u minus d by dx of partial f by partial ux plus d by dx square, the double derivative of partial f by partial uxx is equal to 0. ठीक है? So this is 0 and this is 0 and this last term, वैसे minus sign से अब कोई फर्क नहीं पड़ता because you know वो खत्म हो गई ये बात, you know, because is equal to 0 है ना. So all you're going to have is d by dx of a e ux, which I hope you can see is just a e uxx, right? एक दफा second derivative ले लिया ना, which means के e a d square u by dx square is equal to 0. ठीक है? So this is indeed the governing differential equation for a bar continuous, you know, this is so-called strong form of the of our problem, which means minimizing the integral of that strain energy is equivalent to solving our problem. Minimizing this integral is equivalent to solving this differential equation. ठीक है? So अगर हम यही काम इस पे करना चाहें, ये beams के ऊपर करना चाहें, और इस दफा हम ये भी कहते चलो कि you know there's also some work done by external forces. Let's say you've got some distributed external force P acting on an entirety of a beam, और जो beam की deflection in the y direction है, that is given by V. So work done by external forces somehow इसके बराबर हो जाता है, right? So ये half इस half से कट रहा है, ठीक है? Work done by external forces is just going to be equal to you know force multiplied by the deflection. ठीक है? And ये जो term आई है ना, ये इस तरह आई है कि let me just go back to my screen. Okay. You've got half strain into epsilon, which is going to be once again equal to half into E into epsilon square. Stress into strain is just going to become E into epsilon square. And you might recall कि जो epsilon था, this for the case of beam was minus V dV by dx. ठीक है? So this result came from our assumption about the Euler-Bernoulli beam, जो कि इस स्लाइड में आ रही थी. ठीक है? कि अगर एक बीम सिर्फ प्योर बेंडिंग में हो, फॉलोइंग द अजम्पशन के ऊपर वाला जो इलाका है वो इस तरह, फॉर द वे इट्स शोन राइट नाउ, the thing that is above this neutral axis is going to be in compression and the thing below this neutral axis is going to be in tension. Then the compression में ऊपर वाले पॉइंट पे, लेट्स से किसी पॉइंट y के साथ, किसी कोऑर्डिनेट y के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग जो strain in the x direction है, या displacement in the x direction पहले, is just going to be equal to, sorry ये u था, ये u था, right? U is equal to this thing, and then जो epsilon है, that's going to be equal to minus y times उसके बाद double derivative of this v with respect to x.
राइट। सो ये रिजल्ट हमारे पास बीम्स से आया था, बीम्स के बारे में जो हमने जनरली देखा था उससे आया था। एक सेकंड, लेट्स मूव बैक here. Okay, so that means के मेरा ये अभी भी सही तरह से नजर नहीं आ रहा। ओके, ठीक है। सो दैट मीन्स के ये हाफ e इंटू एप्सिलॉन स्क्वेयर बिकम्स हाफ, और इसको हम इंटेग्रेट करेंगे ना उसके बाद ओवर द वॉल्यूम, बिकम्स हाफ इंटू वाई स्क्वेयर डी v by dx whole square, and then we are integrating this over the volume. So which means we are integrating this over the volume, which means ke we are integrating this over the area times the dx. ठीक है। सो यहाँ पे एक बात पहले भी एक दफा आई थी कि जो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया होता है दैट इज जस्ट इक्वल टू वाई स्क्वायर डी ए। ठीक है। सो ये वाई स्क्वायर डी ए वाली जो टर्म है, दिस जस्ट बिकम्स आई, राइट। So then we get to our final result के this becomes integral half बाहर ले आए बेशक of and you know e भी था यहाँ पे कहीं ना कहीं, right? E was somewhere here. E I second derivative of v whole square, right? dx. और उसके बाद ये माइनस पीवी वाली 2pv वाली टर्म, बिकॉज ये हाफ से हाफ कट जाएगा, is the work done by external forces, right? Okay, so this whole thing is my f functional जिसको मिनिमाइज करना है। ठीक है। सो लेट्स से जस्ट इग्नोर फॉर नाउ द फोर्स। ऑनेस्टली फोर्स के होने से सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि, बल्कि लेट्स नॉट इग्नोर द फोर्स, राइट। अगर फोर्स भी इसमें होती तो इसमें माइनस 2pv वाली टर्म भी आ जाती टाइम्स dx, राइट। सो दिस होल थिंग इज हाफ साइन के साथ is equal to f, right? And if I try to plug this back into my Euler Lagrange equation, right? This Euler Lagrange equation. So यहाँ पे instead of phi, I have v, ठीक है? और मेरे पास vx कहीं है इसके अंदर। My f is now half ei times vxx square minus 2pv, right? This is the double derivative. So this is vxx. This is not vx. ठीक है। So अगर ये मेरा f हो, this thing right here is my f, then partial f by partial क्या था पहली टर्म, partial f by partial phi की बजाय हम यहाँ पे v लिख रहे हैं। So partial f by partial v is just going to be equal to minus 2p divided by 2. By the way, ये जो ब्रैकेट्स यहाँ तक की थी, सिर्फ ये ei वाली टर्म सिर्फ इसके साथ है। ठीक है। Okay, so this is just going to be equal to minus p partial f by partial vx is going to be equal to 0, right? I hope you can see case f की definition के अंदर vx कोई नहीं है। Partial f by partial vxx, the double derivative is going to be equal to ei vxx ठीक है। और when you take the derivative of this thing, इसके ऊपर जब मजीद इसका माइनस b by dx करेंगे तो ये ट्रिपल डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है। एंड दैट इज, यहाँ पे फोर्थ क्यों हो रहा है? होता तो फोर्थ ही है वैसे, इज डेफिनेटली करेक्ट। ओह हाँ नहीं, सॉरी सॉरी, आई एम लुकिंग एट द रॉन्ग टर्म, माय बैड। ये दिस इज इसके साथ
इसको हमने डबल डेरिवेटिव लेना था. रिमेंबर दिस इज दिस टर्म राइट हियर. ठीक है, इस वाली टर्म में पार्शियल एफ बाय पार्शियल वी एक्स एक्स के साथ जो टर्म है उसको उसके बाद मैंने 2 दफा डबल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो इट बिकम्स right the fourth derivative of v with respect to x. ठीक है, so overall my Euler Lagrange equation becomes this first term partial f by partial phi becomes minus p. The second term's minus d by dx of partial f by partial phi x becomes minus 0, and this third term uh, d by dx square of partial f by partial vx becomes ei times the fourth derivative of v with respect to x. And this is actually our governing differential equation for a beam. ठीक है, so यहाँ पे एक थोड़ा सा साइड नोट जो कि once again beam से related मैंने एक relatively longer video बनानी तो थी जो कि that's just going to be things from mechanics of materials, not really part of this course, sort of optional. मगर if you recall एक हमने problem solve किया था जो कि पिछली दफा मैंने शायद बताया था कि उसके सेशनल में था. Not the alternative. Just open it up again. This question, right? So this आपको नजर आ रहा है ये this solution to the deflection of a cantilever beam. This is actually the solution of this fourth order differential equation. ठीक है, अगर आप इस equation को देखें एक नजर तो you've got fourth order equation है ना, तो when you try to solve it you have to sort of integrate it a couple of times, and after you integrate it all of those times you're going to get an equation के जिसके अंदर we are just integrating this with respect to x. Of course हमारे पास x cube तक बात चली जाएगी when you integrate it these many times. ठीक है, so ये जो solution है ना, this is just the analytical solution to this differential equation. ठीक है, I will do an example of this for a cantilever beam maybe in a video if that's not clear. It doesn't need to be clear. This is not really part of the FEM course. ये mechanics of materials के दूसरे course में normally इस तरह की बातें की जाती हैं. ठीक है, but this comes directly from solving this differential equation, just integrating it 4 times. And in order to integrate this 4 times, you might sort of be able to see that you need 4 boundary conditions, right? Because every time you integrate, there's going to be integration constant. In order to find that constant, you're going to need a boundary condition or some information like that. ठीक है, सो बाउंड्री कंडीशन ये इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको फॉर एग्जांपल इन फिक्स्ड बीम्स इस तरह मिलती हैं कि एक बाउंड्री कंडीशन ये है कि द वैल्यू ऑफ यहाँ पे y लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने हमारी टर्मिनोलॉजी में v है, सो v और y प्रैक्टिकली एक ही चीज की बात कर रहे हैं कि v ऑफ x इज इक्वल टू 0, v डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, v ऑफ l इज इक्वल टू 0 एंड v डैश एट l इज इक्वल टू 0. यानी कि दिस इज फिक्स्ड और इसका एंगल इज आल्सो फिक्स्ड at both this side and at that side. So those are your 4 boundary conditions. You integrate this 4 times, use those boundary conditions, we can find these analytical expressions. But once again, that is not subject of this course. इस course में हमने सिर्फ ये बात करनी थी कि trying to find a minimum for this will give us a minimum, will give us the equilibrium conditions for our beam. ठीक है, और इसी की बेस पे जो है ना हमने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला मेथड चलाया था इस चीज की बेस पे, राइट? So this is useful because, and I'm gonna move a few slides, a lot of slides ahead to the one of the homework problems, is to say कि अगर मेरे पास एक heat transfer की equation है, so heat transfer equation for a 1D heat transfer problem एक जिस तरह फिन में होता है कि मेरे पास हीट जनरेशन कोई नहीं है, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम कि टेम्परेचर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा
एक मेटल की फिन में कि जहाँ पे कन्वेक्शन भी हो रही हो और कंडक्शन भी हो रही हो, और कन्वेक्शन जो हो रही हो वो कोई आउटसाइड एयर टेम्परेचर टी इन्फिनिटी के साथ हो रही है। सो उसमें जो है ना उसकी एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यू शुड नॉट नो दिस, आई डोंट नो दिस आइदर, मुझे भी जो है ना हमेशा देखना ही पड़ता है, ये याद नहीं रहती, राइट, बिकॉज आपने वैसे भी हीट एंड मास ट्रांसफर का कोर्स नहीं किया हुआ। ठीक है, बट इन ऑर्डर टू come up with an FEM way to solve heat transfer problems, जो कि आंसर्स आपको करके दे देता है, ऐसी कोई बात नहीं है, this so called strong form cannot really be used। आपने once again कोई इंटेग्रल की मिनिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, right? Because once you can rearrange this as a minimization of problem, right, a minimization of this integral, then you can do all of those steps जो कि FEM के अंदर थे, कि like saying कि temperature is को मैंने किसी तरह लिखना है, इसको मैंने किसी तरह लिखना है as a function of my nodal temperatures, and then take a derivative and then set that equal to 0, और उससे मुझे एक element की जो है ना matrix मिल जाएगा, और उसके बाद मैं उसे सैंपल कर सकूंगा, and I'm going to be able to do all of those steps in FEM। ठीक है, सो हमने करना क्या है, this is your homework problem, कि show कि if this whole thing is my f, ठीक है, and I plug in back into my Euler Lagrange equation, I should get this differential equation, right? So यहाँ पे instead of phi, which was displacement for our solid mechanics problems, you've got T, which is temperature for heat transfer problems. ठीक है, and this is a function of ये जो है ना ये वाली term, this is Tx, this is just T। इसमें Txx एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें डबल डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू x नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, एंड ऑल्सो नोट के जो टी इन्फिनिटी है, दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट, टी इन्फिनिटी को जस्ट एज अ कांस्टेंट डील करना है, इसको जो है ना ये कंफ्यूज ना करे टी के साथ। ठीक है, सो आई होप इसको करने का तरीका क्लियर होगा। ट्रीट व्हाट इज इनसाइड दिस इंटीग्रेशन विद द हाफ साइन, हाफ को भी अंदर ले आए बेशक, एज f which is a function of x, the independent variable, capital T, the temperature, and Tx, the first derivative of temperature. Second derivative of temperature is not appearing here, so wali term ghaib ho jayegi. Plug it back into this Euler Lagrange equation is equal to 0, right? So when you plug it back, this whole differential equation should take this form. ठीक है, it looks complicated, but when you try to solve it out, ये 5 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, इस पे बाय द वे कोई सवाल इस होमवर्क प्रॉब्लम पे? ओके, सो मूविंग ऑन। अब इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हैं। ऑब्वियसली एक दफा इंटीग्रल आ गया हमारे पास, तो उसके बाद हमने जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला मेथड किया था वो भी यही कर रहे थे, हम घुमा फिरा के इसको मिनिमाइज करने की ट्राई कर रहे थे। मगर चैप्टर 5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑफ द एफईएम टेक्स्ट बुक, जिसके अंदर ये वेरिएशनल अप्रोच और वेड रेजिडुअल मेथड वाली अप्रोच है, उसमें दे हैव टेकन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई डोंट सपोज दिस हैज एनी रियल फिजिकल मीनिंग, ठीक है, या कम से कम मैकेनिकल सेंस में तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट दिस इज जस्ट अ डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर फी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं काफी सारे डिफरेंट वेड रेजिडुअल मेथड्स से, या बेसिकली एक सेकंड में बात की है वेड रेजिडुअल मेथड पे भी, बिल्कुल भी, मतलब इसको जो है ना हमने मिनिमाइज करना है। ठीक है, सो इसको मिनिमाइज करते हुए दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला काम ये है कि वी कैन सॉर्ट ऑफ सजेस्ट कि solving this differential equation is equivalent to minimizing this integral। ठीक है, so if I ये भी हम एक दफा प्रूव कर सकते हैं। Unfortunately we can't do the inverse। अगर मेरे पास I have no real way of finding this f using the Euler Lagrange equation। ठीक है, so ये mathematicians को या people who've got a decent amount of experience solving these problems, they can come up with these functionals. It's not easy to come up with because it's the inverse of the actual problem, right? Given
given this f, it's probably easy enough to show okay, if I apply the Euler Lagrange equation of this on this, I should get that. That's probably not that difficult to show. Magar it's not easy to find some functional कि जिसके ऊपर मैं Euler Lagrange equation बनाऊंगा तो I will indeed get this differential equation, right? So that's not easy to show, but the inverse is definitely much easier. ठीक है? So for example, यहाँ पे the claim is, this is a third example, इसके बाद उम्मीद है कि कुछ ना कुछ clarity आ जानी चाहिए. इसके if my functional is indeed half of minus ux square plus u plus sorry u नहीं था ये phi x square plus phi square plus 2 phi x, ठीक है? Then using this in the Euler Lagrange equation, and I'm just going to write the first two terms because the third term is not appearing, which is k partial f by partial phi minus d by dx of partial f by partial phi x is equal to 0. अगर मैं इस f को प्लग इन करूंगा ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन में, जिसपे phi x वाली टर्म मैंने वैसे ही डिलीट कर दिया बिकॉज इसमें phi x नहीं है, तो आई शुड गेट माय डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि मेरा ओरिजिनल प्रॉब्लम था, राइट? So how would you do that? This is the third example. Iska derivative with respect to phi is just going to be equal to, so this term is just going to be equal to phi plus 2x, right? यहाँ से phi वाली टर्म आ जाएगी plus 2x by the way divided by 2, so plus x, right? ये divided by 2 भी हो रहा है, so phi plus x, and this term partial phi by partial partial f by partial phi x is going to become minus phi x, ठीक है? So then when you take a derivative of this with respect to x, ये phi x बन जाएगा, minus से minus plus हो जाएगा, so you're gonna get phi xx plus phi plus x is equal to 0, which is our original differential equation, ठीक है? So it's not easy to find f corresponding to this differential equation, but given an f, it's easy enough to find the corresponding differential equation. Unfortunately, हमें अक्सर उल्टा काम करना पड़ता है. अगर आपने इस differential equation को solve करना है इस तरह के मेथड से, तो हमें उल्टा काम करना पड़ता है, जो कि it's really not that easy. ठीक है? So we're not really going to solve, you solve this using this Rayleigh-Ritz method. That's just a mathematical method to, जिसको हम इस वक्त ignore कर रहे हैं. हम instead इस वाली बात पे जरूर फोकस करें और इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे कि इस पे by the way you got two boundary conditions कि phi is a phi of 0 and phi of 1 is equal to 0, right? So हम assume कर सकते हैं कि, and this is going to be what we are going to use in the so-called weighted residual methods, is कि a solution of phi of x, a tentative solution जो कि मुझे नहीं पता कि exactly क्या होगी, could be in this form. और ये जो form है ना, ये हमने इस वजह से select किया है, एक because this is a second order differential equation, so we are selecting two constants c1 and c2 multiplied by two like functions, और ये दोनों functions इस तरह के हैं that they verify, they agree with the boundary conditions. So when I plug in x is equal to 0, both of these go to 0 as they should. Boundary conditions कहती हैं कि phi of 0 is equal to 0. यहाँ पे if I plug in x is equal to 0, this becomes 0 and this also becomes 0. And when I plug in phi of 1, it also becomes 0 because यहाँ पे 1 minus x है और यहाँ पे भी 1 minus x है, ठीक है? So both of these terms do indeed go to 0. They do indeed satisfy the boundary conditions. So इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि maybe let's assume an approximate solution consisting of some constant multiplied by a function plus some other constant multiplied by another function, and both of those functions
agree with the boundary conditions. And then the next step is to find these constants C1 and C2 so that ये इसके बराबर ये actual solution के करीब करीब आ जाए. ठीक है? Multiple ways to do that. यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे इसका डबल डेरिवेटिव लिया, right? Take a double derivative of this and plug it back here, right? इसका double derivative, sorry, इसको तो actually they're using this functional, so single derivative लेके square कर दें और इसको square कर दें और plus 2 phi of x कर दें. This is your single derivative. उसके बाद इसको square कर दिया, उसके बाद इसके अंदर add कर दी इसकी अपनी definition, right? And take its integral from 0 to 1. Then take its derivative with respect to C1, take its derivative with respect to C2, and set both of them equal to 0. That's going to give me a value of C1 and C2 which minimizes the integral. ठीक है? ये इसको मैं दोबारा से इसको हम एक्चुअली कंप्लीट या बेहतर तरीके से नहीं देखेंगे बिकॉज ये वही काम हो रहा है जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में हो रहा था. ठीक है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड में हम क्या कर रहे थे, आई की एक वैल्यू थी, ठीक है, कोई हमने कुछ एज्यूम किया, इस फी को हमने किसी, वैसे तो उस इन दैट केस हम लोग नोडल कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में हमने लिखा था, एंड देन वी जस्ट took a derivative of this I with respect to those nodal coordinates and set that equal to 0. ठीक है? यहाँ पे हम इसको in terms of this function in terms of ये C1 into F1 plus C2 into F2 की तरह लिख रहे हैं, and we are plugging it back into this I and then taking a derivative with respect to C1, taking a derivative with respect to C2, setting both of them equal to 0 to find what values of C1 and C2 are going to minimize this integral. ठीक है? Don't like अगर आप देखना चाहते हैं कि exactly ये solution किस तरह हुआ है तो इसको आप follow कर सकते हैं, मगर overall ये वाला method is very similar to what we did in the minimum potential energy. ठीक है? By the way, जिसके नतीजे में जो result आता है, this doesn't at all look like the exact solution, but at least it's gonna plot similar to the exact solution, right? इसका plot जो होगा ना वो काफी similar ही indeed बनेगा. ठीक है? हमने इसी प्रॉब्लम को जरा से डिफरेंट तरीकों से भी सॉल्व करना. सो दिस वाज द वेरिएशनल अप्रोच, राइट? दिस पार्ट वाज द सो कॉल्ड वेरिएशनल अप्रोच. ठीक है? बेशक इसके आगे जो ये वाला काम है ना, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला मेथड, बट you're still finding an integral and trying to minimize that integral. The other possible approach, and by the way, let me just go back to the absolute start. Remember this? So हम लोग जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला मेथड था वो भी वहां फिर आके वेरिएशनल टाइप का ही था, फाइंडिंग मिनिमाइजिंग सम आई, राइट? So there's a fundamentally different type of approach to solving problems, which is called weighted residual formulations, जिनको हम very briefly सिर्फ एक एग्जांपल के जरिए देख रहे हैं. ठीक है? वो ये है कि जो हमारे पास पीडीई थी, स्टार्ट उसी तरह होता है कि जो पीडीई थी उसकी हम कोई सोल्यूशन एज्यूम करें, ठीक है, जिसकी फॉर्म हो सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ए फंक्शन, एंड दैट फंक्शन should be such that they satisfy the boundary conditions, right? ठीक है? So ये यहां तक जो है ना, ये वही काम है जो हमने 2 मिनट पहले किया था कि assume some solution to the partial differential equations, which is C1 multiplied by F1 plus C2 multiplied by F2, and this F1 and F2 are linearly independent. ऐसा नहीं है कि इसको किसी constant से multiply कर दो तो दूसरा function बन जाए. So they have to be linearly independent and they have to satisfy the boundary conditions. यहाँ तक का काम हमने 2 मिनट पहले अभी दोबारा किया. Let me go back to the हाँ, यहाँ तक हमने already किया हुआ है. So उसके बाद weighted residual methods में what we are doing is we are plugging this assumption of our solution back into our differential equation.
ठीक है. So if our differential equation, if I plug this definition back in here, then that should ideally be equal to 0. Okay? But it's not going to be equal to 0. It's going to be equal to some error, which is going to be called the residual. Okay? So when you plug it back into the differential equation, you'll get the error, which is going to be called the residual. उसके बाद हमने कुछ तरीके करने हैं, काफी सारे तरीके available हैं. We are going to briefly discuss 4 of them, which are methods to minimize that error. ठीक है? The first one of them is going to be called the collocation method. So इन सारों में हमने ये वही differential equation है. The same differential equation we were talking about some time ago. वही boundary condition है. 0 पे और 1 पे this is equal to 0. We're going to assume an approximate boundary. By the way, this could be something else, right? This could be any other function, any other set of functions which satisfy कि 0 पे और 1 पे the answer is 0. ठीक है? कोई साइन फंक्शन, कोई कोसाइन फंक्शन भी तो होता है इस तरह का कि जो कि it loops back to 0. So you could replace this with a sine or a cosine. Any function which satisfies these boundary conditions. Any two such independent functions. Right? So take this definition of phi of x, take its double derivative, and then add it to itself and add x. Essentially plug this back into my differential equation. So I'm going to get this expression. ठीक है? इसकी हम एक example as an assignment आप लोग कर लेना, तो that's all I require from you, honestly. You can have a look at it. It's not that really that difficult. इसको थोड़ा सा expand किया हुआ है. इसका double derivative लेंगे तो कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं, honestly, because जब single derivative लेंगे तो you're gonna get 2 into x minus 2 into क्या लिख, let me just इसे मैं side पे रख के once again इस पे दिखा देते हैं. My screen is not really responding. Hello. Nope, nothing. Okay, so there's a problem with the webcam probably. Okay, there's nothing to worry about here, right? Just take a double derivative of this, add it to itself, add an x. This is my residual. And I have to find ways to minimize this residual. Okay? The first method is the collocation method. जिसमें all we are saying is के कोई 2 points ले, by the way यहाँ पे जो है ना collocation method की बात हो रही है कि कोई 2 points लेने बीच में कि जहां पे इस r की वैल्यू 0 हो जाए. Right? If you set r is equal to 0 at any 2 points between 0 and 1 और उस पे भी r की वैल्यू मैं 0 कर लूं, तो I can sort of say कि most likely बीच में भी कहीं ना कहीं 0 ही होगी. ठीक है? What that means is कि इसकी actual solution जो है ना, it's probably gonna look something like this कि x is equal to 0 पे भी phi की वैल्यू 0 है, x is equal to 1 पे भी phi की वैल्यू 0 है, बीच में कोई ये कुछ कर रहा है. ठीक है? ये इसकी कोई एक्चुअल इसका कोई प्रोफाइल बन रही है. ठीक है? अगर मैं इंश्योर कर लूं कि the residual या the error is 0 not just at the boundary conditions but also at 2 other points, right? At x is equal to, let's say, 1 by 2 and x is equal to, let's say, 1 by 4. It could be any other points as well. It doesn't have to be these 2 points. Then I can be reasonably confident कि जो error है, the so-called error या residual, if it is 0 here,
and 0 here and 0 here and also 0 here, तो बीच में कितना आगे कितना error हो जाएगा, right? So it's going to stay close to 0 overall. ठीक है? This method is called the collocation method. Setting the residual equal to 0 at, in this case, because you just got C1 and C2 two functions, setting it equal to 0 at 2 points, right? So what we are doing is के इस जगह पे first we are using x is equal to 1 by 4 is equal to 0. That's going to give us one equation in C1 and C2. And then we are plugging in x is equal to 1 by 2 in this equation, setting that equal to 0. You're going to get a second equation in C1 and C2, and then solve them simultaneously. So this is your first equation. This is your second equation. Solve them simultaneously to get a value of C1 and C2, right? That would ensure कि error कम से कम इन 4 points पे तो 0 है, तो बीच में भी कितना बढ़ जाएगा. ठीक है? Does that make sense? Some sense at least. Okay. The next method is subdomain method, कि जिसमें हम कह रहे हैं कि let's say यही 0 से 1 के बीच में we want to ensure that the integral of the error between 0 and let's say 0 से 1 by 4 के बीच में भी 0 है, let's say, और 1 by 4 से half के बीच में भी let's say 0 है. So the integral of the error over dx, we are setting that equal to 0 over small subdomains, and those subdomains की जो choice है वो भी once again आप पे है. It doesn't have to be from 0 to 1 by 4 and then from 1 by 4 to 1 by 2. It could be, for example, from 0 to half and then half to 1, right? Anywhere within the bound 0 and 1. इसके बीच में कहीं भी 0 और 1 के बीच में कहीं भी आप ये subdomains बना सकते हैं. So in which case what we are doing is between 0 and 1 दो subdomains बना लें. इसने क्या किया हुआ है, 0 से 1 by 4 के बीच में एक subdomain बनाया हुआ है. R has the same definition as before, integrated with respect to x and set the limit 0 से 1 by 4. This is going to give you equation number 1, right? And then integrate, the integral का result तो honestly same result है. Limits change कर ले from 1 by 4 से let's say 1 by 2. This is our subdomain number 2. Right? And this is going to give you an equation 2 and solve them simultaneously. So what we are ensuring is that the error, the integration of the error in these two subdomains is indeed equal to 0. So one can hope कि overall error भी ज़्यादा नहीं होगा, right? So this is going to give you some value of C1 and C2, which would be a decent approximation of our actual differential equation का solution. ठीक है? Galerkin method में हम क्या कर रहे हैं? Remember के our functions, this was f1 and this was f2, right? ये f1 है और ये f2 है. ठीक है? So in the third method called the Galerkin method, what we are doing is f1 multiplied by the residual का integral over the entire domain को भी 0 put कर दें. f2 multiplied by the residual का integral over the entire domain को भी 0 put कर दें. ठीक है? So once again these just become functions of c1 plus c2. So ये भी जो है ना some constant times c1 plus some other constant times c2 is equal to 0 type की equation बन जाएगी, right? और ये भी some constant times c1 plus some another constant times c2 is equal to 0 नहीं, is equal to some other constant, right? Type की equations बन जाएगी, and you would be able to solve these two simultaneously to get C1 and C2. ठीक है? That is the so-called Galerkin method. And finally, the least square method, which is my favorite in some sense, is because हमेशा जब भी error आता है ना, तो this is sort of generic. इसको आप weight residual से match भी ना करें. If you can come up with some error के लिए कोई function, right? As कोई line fitting करनी हो आपने, तो उसमें भी हम इसी तरह का काम ही most commonly करते हैं कि the integral of the square of that error should be set to 0.
या the overall sum, integral की बजाय let's say sum, if you are talking about discrete points, then the sum of the square of an error should be equal to, should be minimized. ठीक है, जीरो चलो अगर ना भी हो सके, कम से कम it should be minimized, right? ठीक है. So what that is saying is कि over the entire region, r square multiplied by some weights, sure, but those weights could just be 1, right? So यहाँ पे weights are just equal to 1 हमारी example में. Uh, over the entire region should be minimized. So that means कि r square from 0 से 1 का integral, yeah, the sum of all square of all my errors should indeed be minimized. ठीक है. So then that means कि r square को minimize करना है, कौन सी values of c1 and c2 होंगी which is going to minimize I. ठीक है. You can do that by taking the derivative of I, with respect to c1 and with respect to c2 and setting both of them equal to 0. ठीक है. So this is also going to give you two equations in c1 and c2 जिसको आप simultaneously solve कर सकेंगे इस equation c1 और c2 को to find some value of c1 and c2 and plug, and then we are once again saying कि the solution can be approximated by this right here. ठीक है. Does this make some sense? Okay. So before, वैसे by the way, ये बात यहीं पे कर लेते हैं ताकि प्रेजेंटेशन मुझे दोबारा ना खोलनी पड़े. इससे all I really want you guys to do is find any differential equation जिसका आपको बेहतर है कि actual exact solution भी पता हो. ठीक है. So if you're having problems with finding any differential equation, ये crazy की textbook मैंने एक दफा खोल के जो है ना बहुत सारी ये ODs उठा ली, कोई OD उठा ले, first order OD preferably because it's easier. उसकी exact solution you can probably find, right? इतना मुश्किल नहीं है. जो कि उसकी आपके पास बाउंड्री कंडीशंस भी होनी चाहिए, and then find a solution to that using any of those 4 weighted residual methods. ठीक है. If you can do that, that's all I require from ये weighted residual वाला method. ठीक है. Okay, but अभी क्लास शुरू होने से पहले, since these are still like rather mathematically intensive methods and these are still घुमा फिरा के minimization methods, so I thought यहाँ से मैं थोड़ी सी minimization पे थोड़ा सा बात कर लूँ और इसे MATLAB में implement करना जो कि बहुत आसान हो जाएगा relatively पे बात कर लें, right? MATLAB में किसी चीज को minimize करना is really easy. So let's take this example and try to minimize this using MATLAB, right? So I made a small code, 2 small codes actually. आपको ये शायद साथ में अभी अपने पास लिख के भी रख लें तो बेहतर होगा ताकि आपको ये बार-बार लिखना ना पड़े. But recall that your value of R, the residual, is this. ठीक है. This is your value of the residual. C1 into -2 plus x minus x square plus C2 into 2 minus 6x plus x squared minus x cube plus x. This is your value of your residual. ठीक है. So I wrote 2 small programs. एक में तो ये कि for some, I'm sweeping over some value of C1 from -2 से 2 and some other value of C2 from -2 से 2. And I hope MATLAB की स्क्रीन नजर आ रही होगी. ये blurred तो नहीं है क्योंकि टेक्स्ट जरा छोटा है इसका. Do I need to use a magnifier? नहीं. या टेक्स्ट नजर आ रहा है? Anyone? थोड़ा जूम करते हैं. Okay. How? Magnifier? ठीक है. Okay. So what I'm doing is I'm sweeping over values of C1 and C2. ठीक है. Between -2 से 2.
अब सवाल ये कि why minus a2 से 2? Honestly, because I've seen the plots and it seemed appropriate to use this, right? आप you're gonna have to maybe use some trial and error कि किस range में C1 और C2 की values आनी चाहिए. I also knew the answer because analytically तो solve हो चुका है ना ये 4 दफा 4 different methods से. ठीक है? Thank you. Okay, so what we are doing is ke between x is only valid between 0 and 1, right? So मैं residual, which is going to be called r, is going to be a function in this case of my choice of c1 and c2. So for some value of c1 and c2, for the first value, let's say -2 के लिए, so यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि c1 की value -2 है, c2 की value भी -2 है. I want to find the sum of this residual for all of my points in x. ठीक है, ये क्या रीड कर रहा है? दिस इज रीडिंग c1 into -2 plus x minus x square plus c2 into 2 minus xx plus x square minus x cube plus x. So this whole thing is my residual for सबसे पहले the first point in x, then the second point in x, all the way to all of the points in x. So ये integration ही practically हो रही है, ठीक है? And I'm using the absolute value. अगर स्क्वेयर करने का भी बाय द वे यही फायदा होता है. अगर आप स्क्वेयर भी करें, you're not going to get any change in the result, because what a square does is कि नेगेटिव वाली इसको पॉजिटिव करके डबल कर देता है, राइट? सो रिमेंबर कि अगर हम किसी चीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं या सम ले रहे हैं, देन इफ यू गॉट रियली हाई वैल्यूज, पहले पॉजिटिव है उसके बाद नेगेटिव है, उनका सम तो जीरो हो जाएगा, ठीक है? सो वो एक एरर को छुपाने का एक तरीका बन जाता है, right? Because we are not saying that the error is zero. We are saying the error could be very high but positive, and then very low but negative, right? And their sum is still zero. So that's not useful. इस वजह से square करना is often useful. So instead of squaring it, I'm saying कि यार error में add किए जाओ absolute value, sweeping this across. And then plot, just plot. And this is the easiest way of optimization, sort of. Just plot and see the result based on that plot, right? So if I run this, मेरे पास कुछ I made this contour plot of my residual, right, with respect to C1 and C2. So my x-axis is C1, my y-axis is C2, and these are contour lines, ठीक है? So यहाँ पे जो overall residual की value बढ़ी जा रही है, ठीक है? सो बाय द वे इसके आगे एक मजीद एक छोटी सी ऑप्शन डाल देते हैं, तो वो आपको वैल्यूज भी बता देता है कि अच्छा यार इस लाइन पे रेजिड्यूल की वैल्यू क्या है, इस पे क्या, इस कॉन्टूर लाइन पे आर की वैल्यू क्या है, इस पे आर की वैल्यू क्या है. सो दैट वुड हैव मेड इट आई गेस अ बिट मोर इजी टू रीड, बट व्हाट दैट मींस इज के अराउंड दिस पॉइंट, राइट, अराउंड दिस पॉइंट, ठीक है, माय वैल्यू ऑफ रेजिड्यूल इज मिनिमम, ठीक है? And as I move in this direction, my value of residual is going to increase, ठीक है? So just basically this point, ये point जो बीच में कहीं आता है, I could just look at it graphically and just say कि अच्छा इस point पे actually minimize हो रही है, my error is being minimized around this point at the center of my contour plot, ठीक है? So this is how you would, I would suggest कि जब भी आपके पास कोई फंक्शन हो, ग्राफ करके जो है ना, आपको काफी हद तक आइडिया हो जाता है कि उसकी मिनिमम पॉइंट किधर होगा, ठीक है? Since this is the function itself which is to be minimized, which is this क्या कहते हैं, this nice function in just two variables, since it's this nice function which can actually be इसके डेरिवेटिवली लिया जा सकता है, सारा कुछ किया जा सकता है. सो इस वजह से देयर आर नाइस मैथमेटिकल वेज टू डू इट, टू फाइंड एग्जैक्ट मिनिमम पॉइंट्स, राइट? जो कि ये मिनिमम स्क्वायर मेथड में था, फॉर एग्जांपल. इसका बस यू टुक अ डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू c1, टुक अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू c2 एंड सेट दैट इक्वल टू 0. सो व्हेन यू कैन एक्चुअली डू दैट, then it's probably best to use any mathematical method, right? और अगर ये linear हो तो फिर there's very nice ways to do it as well, कि linear functions को minimize करना तो बहुत ही आसान काम है. But the thing about MATLAB, the useful thing about MATLAB is कि as long as you can find
function that returns something, right? Then आपको बेशक उसकी mathematical form ना भी पता हो ना, you can just plot it and find the minimum, or you can use built-in MATLAB codes to find the minimum. ठीक है? So this is the second small little code, which is really a subset of this part. जिसमें all I'm doing is कि for this is a function that returns R, the residual, for some input C, which has two parts, C1 and C2. ठीक है? So if I provide this function some value of C1 and C2, so it's going to give me the sum of all absolute values of R over the entire 0 से 1 का domain. ठीक है? Which means कि if I'm in the right place, yes, I'm in the right place. All I have to do is maybe type a residual of some कोई value of C1 and C2 लिख के. ठीक है? So अगर मैं C1 और C2 दोनों को 0 0 लिख लूं तो it gives me an overall sum of all errors between over the entire domain is equal to 50. अगर मैं कोई और value लिख लूं, let's say 0.1, 0.5 or something, it's going to give me a different value, a slightly higher value. So obviously this made it worse. मैं चाह रहा हूं कि ये overall जो चीज है ना ये minimize हो जाए. ठीक है? So MATLAB has this wonderful दो built-in functions. One is called fmin search, and the second is called fmin con. So fmin search finds the minimum in an unrestrained manner, कि जिसमें कोई conditions नहीं होती. ठीक है? इसमें भी by the way कोई conditions नहीं है. fmin con is conditional. So उसमें if I were to maybe also add an additional constraint optimization अगर मैंने करनी हो कि नहीं, I want to minimize this residual function, but I also must ensure कि C1 and C2 are greater than 0. Then this is a constraint कि C1 has to be greater than 0, C2 has to be greater than 0. या ये कुछ भी इस तरह की constraint हो सकती है कि I must ensure कि C1 and C2 is less than 2. I must ensure कि C1 square plus C2 square is less than 5. I don't know. If you have some constraints, then use a function called fmin con, right? Constraint optimization के लिए. If you don't have any constraints, then all you have to do is use a function called fmin search. So the way to apply it is just fmin search लिखें, brackets के अंदर जो function है उसको आपने minimize करना है वो लिखें, which is residual in this case, और उसके बाद give it some initial guess. So all optimization methods start with some initial guess, some guess value. कि चलो let's look at some random point. ठीक है? Let's find the error at that point. Yeah, the function which is to be minimized, which is called the objective function. Let's find the value of the objective function at my starting point. कुछ methods में you have to find the gradient of of your objective function at that starting point. कुछ में you have to find the Hessian. आपको कुछ याद आ रहा है gradient और Hessian क्या होता था? Vector calculus में कुछ चीजें होती थी. Basically, it's first and second derivative. ठीक है? And then using that information, एक method for example ये हो सकता है कि find the steepest descent, right? Find the direction in which objective function क्या कहते हैं loses value as fast as possible, and keep doing that over multiple iterations, until you get to the actual minimum, right? So इस तरह के methods होते हैं कि जहाँ पे you find the value of the objective function, you maybe find the gradient, you maybe find the Hessian of the objective function, then you do some iterations and finally get to your minimum point. built-in function जो है ये भी इसी तरह का एक method को इस्तेमाल करता है. It doesn't, मगर उसमें you don't need any information on the derivative or the second derivative. You don't really need a mathematical expression, right? आपके पास कोई भी black box function हो, give it a value, it spits out another value. You should be able to minimize it if it indeed has a minimum using fmin search, right? But you still need to provide an initial guess value. So that initial guess value could be anything. I'm just going to start with 0 0. Okay? So if I start with 0 0, it's just going to spit out values of C1 and C2, which minimizes this function residual, right? और आप ये check कर सकते हैं कि, और I did check this, कि this is pretty much the same as जो answers आपके पास आते हैं ये इन मेथड से.
ठीक है. So for example इस मेथड में I'm gonna minimize, खत्म कर देते हैं. इस मेथड में मेरे पास ये दो simultaneous equations हैं जिनको मैंने solve करना है. ठीक है. These two equations that I have to simultaneously solve. So that's not really very difficult. ये दो linear equations है, right? So in this case, C is just going to be equal to if you look at these two equations, इसमें you can call पहली वाली equation को आप लिख सकते हैं 101 30 1 over divided by 30, 101 divided by 60, 707 divided by 2. If I just write it in equation form, this is not really solvable. Magar, if I write it in a matrix form, what it's going to look like is 2 by 2. 101 over 30, 101 over 60, 707 over 420, 1572 over 420 multiplied by C1 C2 तीसरा कुछ नहीं है is equal to 11 by 12 and 399 over 420. So if C1 and C2 is just inverse of this multiplied by this, right? So very easy to do in MATLAB, obviously. So if you try to do it yourself, if you want, you're gonna get values very similar for C1 and C2 to these two values right here. ठीक है? Of course, इन्होंने mathematically derivatives लेके किया है. We didn't take any derivatives. We just asked MATLAB to minimize the sum of the absolute value of the small errors as I sum from 0 to 1. यहाँ पे इन्होंने integral किया है, the proper mathematical way of doing it. यहाँ पे this is discretized, right? So obviously my accuracy is going to increase when I increase the number of things in this x. अगर मैं इसको सिर्फ इसमें कम values हो x के अंदर तो ये my accuracy is going to decrease. अगर इसके अंदर ज़्यादा values हो my accuracy is indeed going to increase. ठीक है? I think that's all I have. कोई सवाल इसमें से? I know we covered a lot of material, but thankfully we are done with the mathematical part of FEM. For the homework problem, all you have to do is take any simple, preferably first order differential equation, जिसके दो boundaries पे value 0 हो, right? Similar काम करें to the problems, right? 0 वाली ये रखें. वैसे तो कोई और भी हो सकती है boundaries पे values, but let's just pick something कि जिसके दोनों boundaries पे value 0 हो, and find some function. By the way, these functions work as well, right? ये जो इसके अंदर function है ना, these functions work as well. ये भी ऐसे functions हैं जो कि 0 और 1 के बीच में the value of these functions is 0, but you can use a sinusoidal, right? So a sine function, for example, has a value of 0 at 0 and has a value of 0 at pi, for example, right? So you can use any sinusoidal function as well, जहाँ पे आपके पास दो boundaries हो जो कि जिस पे value 0 हो, or you can use a quadratic function similar to this one, ठीक है? And solve it using any of these four methods: collocation, subdomain, least square, Galerkin, any of those four. That's what you have to do. ठीक है? Of course, अगर कोई problem हो करते हुए तो you can let me know. I'm gonna stop the recording.